morning everyone. This video lecture for class 7 subject science chapter number 10 and that is respiration in organisms. So dear students, again it's warm morning. So let us start. Today is a beautiful and wonderful day with a sweet prayer. Let's start. Join your hands. Close your eyes. Repeat after me. Fine. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरी तू बख्शिश कर तेरी है ज़मीं. Once again, good morning to all. Let's start today's chapter, that is respiration in organisms. So in previous video lecture we have already discussed we take in and give out the air with our nose, right, with our nostril cavity. So we take in and give out the through nostrils, breathe in, that is called inhalation, and breathe out with the help of nostrils, that is called exhalation, isn't it? Now what is the breathing rate? That was already we have discussed regarding that is very simple to calculate, right? What we have to do, we have to in 1 minute we have to count our breathe rate, right? हमें 1 मिनट में काउंट करना है कि हमारे ब्रीदिंग इन कितने टाइम हो रहा है. A breathe means 1 inhalation plus 1 exhalation, right? Already we have talked about it. एक बार 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार इनहेलेशन कर रहे हैं प्लस कितनी बार एक्सेलेशन कर रहे हैं. दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट, then you can come to know that a normal person what breathing rate must be, what breathing rate should be there, isn't it? So today's we are going to start about the lungs. As you are able to see here, some activities are seen in this figure, all the various activity carried out by person during a normal, isn't it? एक नॉर्मल पर्सन जो हमारे पूरे डे में हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. फर्स्ट फिगर वी आर सीइंग दैट वन लेडी इज़ वॉशिंग यूटेंसिल्स. इन अनदर पिक्चर वी आर सीइंग वन लेडी इज़ स्लीपिंग. फाइन. देन मूविंग इज़ ऑल्सो देयर, रनिंग, डांसिंग इज़ ऑल्सो सीइंग इन दिस फिगर. वन बॉय इज स्टडिंग ऑल्सो देयर. एंड इन लास्ट पिक्चर वन मैसून इज़ वर्किंग, इज बिजी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन बिल्डिंग. सो हाउ कुड अ पर्सन डू दीज ऑल एक्टिविटीज़? अगर वो पूरे दिन में हम ये जो भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो हर एक एक्टिविटी के लिए उनका ब्रीदिंग रेट भी डिफरेंट होगा. सपोज़ हम कोई वर्क स्लोली कर रहे हैं तो उसमें हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ इफ़ यू आर डांसिंग एंड रनिंग, इजंट इट? सो दैट इज़ डिफरेंट. दैट breathing rate can be count at the different time. It would be different, isn't it? Let us start the new topic of this chapter, that is how do we breathe. Fine. So here one figure is given. Let us understand about the mechanism of the breathing. Normally what is happening, we take in air through our nostrils, that we all know. हम nose के through inhalation करते हैं, है ना? When we inhale air, it passes through our nostrils. Fine. As you are able to see here, first figure is given, that is nostril. So सबसे पहला जो पॉइंट इंडिकेट किया गया देयर, दैट इज़ द नॉस्ट्रिल. फाइन. सो नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारा इनहेलेशन हो रहा है एंड एक्सेलेशन हो रहा है. एंड व्हाट हैपन अनदर, इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल इनटू द नासल कैविटी. ओके, इनटू द नेजल कैविटी. अब जो हम इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सेलेशन कर रहे हैं, दैट इज़ हियर. दिस इज़ द फिगर where nasal cavity is there, है ना? This is the nasal cavity. I am writing in short form here. In first indication which is given, that is the nasal cavity, where our breathing process start with the help of nostrils. Fine. Moving further, अब उसके बाद क्या होता है? नेजल कैविटी. फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर रीचेज अवर लंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, with the help of this type of tube, that is called pharynx and trachea.
फेरिक्स एंड ट्राचिया के थ्रू इट ओपन्स इनटू दी लंग्स। कहाँ जाके वो नेसल कैविटी के थ्रू एयर जो रीचेज हो रही है कहाँ जा रही है, लंग्स के थ्रू, है ना। एंड वो लंग्स के थ्रू किसके हेल्प से जा रही है, दैट इज विंड पाइप। विंड पाइप्स अनदर नेम इज दैट इज ट्रेकिया। फाइन। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। दोनों साइड्स के उसके रिब्स होते हैं, एज यू आर एबल टू सी हियर, रिब्स आर सीन हियर, है ना। So we have two lungs which contain the bronchioles, very small branches windpipe. As you are able to see here, the figure is given which is look like a branches, है ना, छोटे छोटे branches जैसा structure दिख रहा है. And we have a pair of the lungs. We have a pair of lungs. सो उनके अंदर क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप की छोटी छोटी ब्रांचेस में नीचे जाके वो लंग्स में जाके कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड एयर सेक्स, ईच लंग प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। दोनों लंग्स में जो भी चेस्ट कैविटी है, दैट हाउ कुड बी इन स्ट्रक्चर, हाउ कुड बी इन फीलिंग, it could be soft, spongy and conical in shape, isn't it? Second thing, lower surface of each lung is concave. जो लंग्स का नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज इन कॉनकेव, है ना। कैसे फिगर दिख रहा है, कॉनकेव, एज द डायफ्राम लाइज बिलो इट। यहाँ पे डायफ्राम बिलो हो रहा है। द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग, है ना। जो राइट लंग्स होता है दैट कुड बी लार्जर देन लेफ्ट लंग, isn't it? Now what is diaphragm? Here I have explained about diaphragm, so you must know what is the diaphragm. As you are able to see, one more thing which I have to discuss, that if we are taking, as we all are suggested that we should take the breathing, inhalation and inhalation, exhalation and inhalation with the nose, right. So here is the question, sometimes we are taking inhalation, sometimes we are having inhalation from our mouth, although that is not advisable, but that condition creates only when we are feeling cough and cold. जब हमारे nostrils के हमें breathing लेना possible नहीं हो पाता, when we are feeling cold and cough, at that time we are inhalation from our mouth. Now here is the again one question, what's the need, why it is not advisable to take the breath with the help of mouth? So we can say there is no lining which can stop the dust particles go in, है ना। नोज़ में, नोज़ के थ्रू वेर मुकूज़ आर ऑलरेडी सिचुएटेड, तो मुकूज़ जो होते हैं वो नोज़ के थ्रू जब हम इन्हेलेशन कर रहे हैं, एज वी ऑल नो एन एटमॉस्फेयर लॉट्स ऑफ गैसेस, कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ द लॉट्स ऑफ गैसेस, है ना। नोज़ के थ्रू सिर्फ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा रही है, isn't it? But the mucus is the one thing, a substance is present in our nose which is having lining, isn't it? And वो जो lining होती है that could be stop to moving dust particle present in air, है ना। जो डस्ट पार्टिकल्स या और अदर गैसेस का जो मिक्सचर है वो नोस में जाने से मुकूस स्टॉप कर लेता है। बट अगर हम माउथ से इन्हेलेशन एक्सेलेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो वो इसीलिए नॉट एडवाइजेबल है, जो बिकॉज इन माउथ देयर आर नो मुकूस, इन माउथ देयर आर नो लाइनिंग विच कैन स्टॉप द डस्ट पार्टिकल टू मूव इन, to go inside our body, isn't it? So what is the work of the mucus? Mucus stop the dust particles to go in our body, है ना। And we can say the particles are trapped by mucus and hair present in our nose, only it allows the pure air, isn't it? सिर्फ वो प्योर एयर को ही अंदर अलाउ करता है अंदर जाने के लिए नोजल कैविटी के थ्रू। एंड क्या होता है फाइनली, जो प्योर एयर जो अंदर नोज के अंदर वो वार्म एयर हो जाती है, दैट कुड बी कॉल्ड प्योर एयर एंड विच मूव बाय नोजल कैविटी एंड कैन गो इन अवर बॉडी। आफ्टर नोजल कैविटी इट गो विथ pharynx. After nasal cavity it go with pharynx. Here it is indicated already, this is the pharynx. First nasal cavity से हमारे
दीज आर द नॉस्ट्रिल्स, नोजल कैविटी से इनहेलेशन हुआ, नोज में जो मुकूस के थ्रू फ्रेश एयर अंदर गई, डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जाने से जिन्होंने स्टॉप कर दिया. फाइन. नाउ what will happen, nostril cavity के through that is named by pharynx. pharynx के बाद it will move in trachea that is also called windpipe. that is also called windpipe. अब windpipe के through that means that is trachea. These trachea opens in the lungs. ये जो trachea है now finally where it will open? It will open in lungs where inhalation and exhalation process completed, right? And here we can say trachea open in lung where it is the divided in branches like structure, right? Trachea opens in lung where it divides in these branch like structure, isn't it? So how could the inhalation process completed? First nostril, fine, first nostril, then nasal cavity, then fine. So first nostril, then nasal cavity, after then pharynx, and then it goes to lungs. Between the pharynx and trachea lies the larynx, right? pharynx और trachea के बीच में होता है larynx. What is there? Larynx, which is the reason for, or that means we can say voice box, है ना. इस larynx को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? voice box. So which is responsible for our speech. जो ये जो बीच में larynx होता है in between of pharynx and trachea के बीच में जो larynx होता है that is we can say a voice box and which is responsible for our speech. So each lungs has millions of alveoli. ठीक है, दोनों लंग्स में हज़ारों मिलियंस की क्वांटिटी में छोटे छोटे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है विच गेट फिल्ड एयर व्हेन वी एयर, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में लंग्स में एयर इनहेल होती है विच इज़ ऑलरेडी फिल्ड विथ एयर, इजंट इट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक that we are going to discuss, that is diaphragm. Already I have told you about diaphragm, as you are able to see here. This thing is called diaphragm. Now what is the mean by diaphragm? See generally होता क्या है, chest cavity जो होती है that will be separated from the abdomen. This chest cavity will be separated with the abdomen. अब क्या होता है, by a muscular wall. by a muscular wall. This is called muscular wall. I am writing in short form, M for muscular, W for wall. So क्या होता है, चेस्ट कैविटी किससे सेपरेट हो रही है? एब्डोमन से सेपरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर दिस वॉल दैट इज कॉल्ड डायफ्राग्म. that is called diaphragm. As you are able to see here, arrow is given. This is the diaphragm which separated chest cavity to abdomen. Fine. So this wall, muscular wall, is called diaphragm. Now diaphragm, when diaphragm moves downward, जैसे ही वो downward move होगी, suppose पहले उसका shape ऐसा था, previously it was shaped like दिस वन, है ना. नेक्स्ट फिगर में हम दिख रहा है इसका शेप डाउन हो गया है. तो होता क्या है, जैसे ही डायफ्राग्राम मूव्स डाउनवर्ड, जैसे ही वो डाउन आ जाती है, द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीज. ऑब्वियसली ये वाला पार्ट अगर नीचे आ जाएगा तो ये पार्ट सरप्लस हो जाएगा चेस्ट कैविटी के अंदर, इजंट इट. दिस पार्ट विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज दिस डायफ्राग्राम मूव्स डाउन. नीचे आ गया तो बी ए वाला पार्ट इंक्रीज हो गया चेस्ट कैविटी में, एंड एज द रिजल्ट एयर फ्रॉम द एटमोसफियर रशेस थ्रू द नोज. यहाँ से एयर विल बी ड्रॉन आउट.
So finally air will be drawn out from here and chest cavity will be increased as the diaphragm moves down. और जैसे ही chest cavity जैसे ही air filled होगी अंदर trachea to lungs, that means inhalation और inspiration. inhalation जैसे ही अंदर होगा, when इसके through inhalation अंदर होगा, that means inhalation process complete होगा. I am repeating, if diaphragm moves downwards to its original shape, what will happen? It will, due to this reason, it will increase the space into chest cavity, and as the chest cavity space will be increased, the result as the result air from atmosphere rushes down, उसके अंदर air आ जाएगी, that is called inhalation. That means we can say when diaphragm moves down, inhalation process occurs. When diaphragm moves up, exhalation process occurs. Right? When diaphragm moves down, inhalation occurs. When diaphragm moves up, air जो extra थी filled हो गई थी lungs में, that will be moves out. Isn't it? Moving further, now we will discuss about the when the diaphragm moves upward to its original position. Here you are able to see this is this original figure. Now air moves up. जैसे diaphragm ऊपर हुआ अपने original shape से, जैसे वो original shape से up हुआ, the space in the chest cavity decrease. Obvious, first it was space was given till here of chest cavity. Now जैसे diaphragm up हो गया तो chest cavity में space कम हो गया. It will be less space. And as the less space, what is the result will be? The result will be extra जो air अंदर inhale हम कर चुके थे, that will be forced out. Air forced out, that means exhalation process will be occur. Fine. So I hope you all have understood what will happen as the diaphragm moves upward. Result, air from lungs is forced out from the body through air passage, or that process is called exhalation. Ribs and muscles of the chest cavity also help in breathing along with diaphragm. So here we can say only diaphragm is not responsible for inhalation and exhalation along the diaphragm. Chest cavity and muscles also are responsible or also helping in breathing process. Fine. Moving further, next topic, that is ribs, that we will discuss about ribs. Now what is ribs? We can say ribs form the rib cage. As we all know, our whole body is made up of skeletal, है ना. हमारी पूरी बॉडी में पहले skeletal होता है, उसके अंदर muscles और bones का joint structure include होता है. तो ribs का क्या काम है? Ribs look like a rib cage, है ना. As you are able to see here, it is look like a rib cage. So it protect the lungs. Rib cage का क्या काम है? It protect the lungs, isn't it? So ribs from the rib cage which encloses the chest cavity. वो किसके उसके अंदर क्या होता है? Fix chest cavity. That means chest cavity के ऊपर एक cover होता है, that is named by rib cage. During inhalation, ribs moves up. जैसे inhalation होता है तो ribs का भी move होना होता है बाहर की तरफ, है ना. As you are able to see here, ribs moves out, है ना. लेकिन जैसे ही inhalation होता है, ribs moves out. जैसे इनहेलेशन होता है अंदर एयर फिल्ड हुआ तो रिब्स का मूव्स आउट होगा. जैसे ही एक्सेलेशन होगा एयर आउट की तरफ जाएगी, रिब्स मूव बैक. फाइन. रिब्स मूव बैक. Or we can say during inhalation ribs moves up and outwards and diaphragm moves down. Ribs on the outside होंगे और diaphragm moves down होगा, as you are able to see here. But in the next picture, as we are able to see, the moment of increases space is chest cavity. जैसे ही इसका space increase होगा, air rushes into the lungs. And opposite of this figure, in the exhalation process, as the space will be less, जैसे ही इसका आउटवर्ड की तरफ ये डायफ्राग्राम होगा तो चेस्ट कैविटी का स्पेस लेस हो जाएगा. चेस्ट कैविटी का स्पेस लेस होगा तो रिब्स विल बी बैक मूव डाउनवर्ड्स. हियर रिब्स मूव अपवर्ड्स, हियर रिब्स मूव downwards. So this whole process occurs in our body during the
respiration. Clear? Moving further, one another topic, that is breathing in other animals, that we will discuss in another video lecture. Till here we have completed how in humans body respiration process occurs, right? Here we have completed the breathing process, how in human body it occurs. Under that we have talked about cellular respiration, types of respiration, that were aerobic and anaerobic respiration. Then we discuss about the breathing rate. After that we have discussed about lungs, diaphragm, ribs, and how inhalation and exhalation process occurs, that means human respiratory. Here we have completed human respiratory system. It's fine. So in exam, if you are asked to draw the figure of human respiratory system, you have to follow this type of diagram. So hope so you all have understood. If you have any query, you can ask by doing to me personal message, or in by asking the question in chat box. Till that, take care. Goodbye. We'll meet in next video lecture with the another topic, that is breathing in other animals, right? How breathing process occurs in different types of animals and birds. So hope so all will be good. Take care. Goodbye.